बहुत आई थिंक एक्सट्रीमली फर्स्ट तो मुझे ऐसा लगता है दैट आर्ट इज नॉट ओनली व्हाट वी डू, जो Yeah. भी है सिर्फ वो करते हैं नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर बिहेवियर. Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं उन्हें मैं क्या बुलाऊं, क्वीन ऑफ होम डेकोर. क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी कलेक्शन देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे. टेबल टॉप्स देख लीजिए, वॉल क्लॉक्स देख लीजिए, चाहे जियोड आर्ट वर्क और या फिर होम डेकोर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, वो हर एक चीज बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट करती हैं. वो मुंबई से बिलोंग करती हैं एंड ट्रस्ट मी, शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट. लेट्स वेलकम योगिनी. हाय योगिनी, हाउ आर यू? आई एम गुड प्रिया मैम, हाउ आर यू? ग्रेट योगिनी, आई एम सो हैप्पी आप यहाँ पर आए एंड आई एम सो एक्साइटेड एज वेल कि आज मुझे आपके बारे में सब कुछ जानने का मौका मिलेगा. इट्स तो ऑल लेट्स माय स्टार्ट. प्लेजर आल्सो. सेम यस हियर, यस. सेम हियर योगिनी. तो योगिनी, आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हैं जो पहली बार आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए. सो ओवर टू यू. I'm Yogini Bhinde from Mumbai, Mulund I belong to. And I have my art came out after I came into SD Academia, and it was really great learning with them, and I had a beautiful journey. लवली. एंड मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि योगिनी हमारे साथ काफी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं. ये चाहते तो ये सीजन 1 में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट शी वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन हर स्किल कंप्लीटली. जितना भी है अपने ऊपर काम कर रहे थे, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे थे. बट उस इतने सारे टाइम के बाद जब ये वापस आए हैं तो क्या कमाल की कलेक्शन लेकर आप आए हैं वापस योगिनी. वंडरफुल. जितने भी प्रोडक्ट्स आप लेकर आए स्टूडियोज के सेकंड सीजन में, दे आर जस्ट ब्यूटीफुल. सो योगिनी, आपके बारे में और जानने के लिए मैं आपको लेके चल रही हूँ फ्लैशबैक में, ठीक है, आपके बचपन के दिनों में. क्योंकि मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट, किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है ना वो कहीं ना कहीं बचपन में हो जाती है, जहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर पहली बार किसी ने आपकी तारीफ करी हो एज एन आर्टिस्ट, या फिर किसी बड़े आर्टिस्ट का आर्टवर्क देखकर आप इंस्पायर हुए हो. तो कोई भी ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट आपको याद हो, आपके बचपन से जुड़ा हुआ, जहाँ पर आपको पहली बार रियलाइज हुआ कि योगिनी तुम्हारे अंदर भी एक आर्टिस्ट है. My mom is an artist, and my aunt also is an artist. तो ऐसे तो हमारे, it's there in our genes, I can say. But when I was small, we were in Pondicherry. My younger अच्छा. brother was born there, and हम्म. हम लोग वहाँ, Pondicherry is a very, creative city. If you ब्यूटीफुल see, प्लेस. it's a very ब्यूटीफुल प्लेस. beautiful place and या. it's very इंडीड. creative. So या. my art, I think, art journey began there. I think I was 6.5 years. There, my mom had, special tutor for me. She had bought अच्छा. a special tutor, and वाओ. वहाँ मेरे को मैं sketching सीखती थी उनसे. So I वाओ. remember myself with this, that small fountain pony, and me learning. And ever since that time, she had always kept those photographs. She had clicked those photographs, लवली. and those photographs have registered so well in my mind कि मैं जब भी ऐसे बैठती थी ना, तो that photographs used to come in front of यस. me. And वहां से निकले फिर तो आर्ट नहीं था लाइफ में. बट देन जब हम लोग वापस मुंबई आए, आई finished my studies. I was doing management, and management अच्छा. I switched over. And हम्म. then I got married. I had my child, everything. And then अभी जब बैठी थी तो मुझे फिर से वही, वो हमेशा वो फोटो की झलक तो आती ही रहती थी. जी मी, that जी small जी. kid doing the art and that brown dress of mine. मतलब वो चीज बहुत ये होता था. तो इन दैट, जी. ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन इंस्टाग्राम वाज सो, इट केम स्लोली स्लोली. इंस्टाग्राम आया, I यस. started seeing, and then raisin stuck. So then I was fully satisfied that yes, this is something that I want to go into, because I was too much with flowers. मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है. ओ. So वो जब रेजिन में I got attracted with those floral stuff, and राइट. the geode का जो patterns होते हैं. बिल्कुल So बिल्कुल बिल्कुल. those things started tricking on my thing, and then it was yes, that this is what I was looking for. I लवली. have done sketching and बहुत सारा किया है.
पर कभी वो स्ट्रक नहीं हुआ कि नहीं आगे वो चीज में जाए. बट देन व्हेन आई फाउंड दिस, it was like, okay, this is what I wanted actually in life. लवली योगिनी, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि ये इंटरव्यूज, ये कॉन्वर्सेशन आर्टिस्ट के साथ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम आर्टिस्ट का आर्ट वर्क देखते हैं, बट उसकी जर्नी क्या रही है, उसकी लेयर्स क्या है जर्नी की, वो हमें कभी पता ही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आपकी आज की जो आपकी जितनी भी बातें हैं जो आप बताएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे, उसके बाद शायद हर इंसान आपके आर्ट वर्क को एक नए नजरिए से देखेगा। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने मुझे जस्ट अभी बताए कि आप का जो बचपन है वो पौंडीचेरी में बीता है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। मेरे तो रिटायरमेंट प्लान्स भी यही है, रिटायर होकर वही जाना है मुझे रहने के लिए। बट लवली लवली योगिनी, सो योगिनी, स्कूल खत्म हुआ, स्कूल के बाद आपकी आगे की पढ़ाई किस में हुई? I did commerce, commerce अच्छा। section mein. I was a commerce graduate. Then हम्म। I gave my CET CAT diya. हम्म। Somehow my mom's health didn't work out. So हाँ। then I didn't go for management. I left हम्म। management there because my home needed me that time, my हम्म। house. So then I switched over back, हम्म। and because management mein time dena padta tha, and I didn't want ट्रू to do ट्रू ट्रू। something that I cannot, do it halfways or so. So राइट then I राइट left राइट। that field and I came back home. I was in my house, I was helping out. हम्म। And then I did my ECCA. I've done my हम्म। yoga teachers training course. So बहुत ओह। सारा alternative things I kept on doing. I was हम्म। maybe finding for something which I wanted to do really. I was not getting that at that point. Then for हम्म। eventually marriage hua. Household responsibilities. I worked as a pre-primary teacher also after that for like 4 years. Great change if मल्टीपल you है see. ना, मल्टीपल में भैया। बहुत कुछ चेंज हुआ है. हाँ। इनिशियली पहले प्री प्राइमरी टीचर से पहले आई वाज अ योगा इंस्ट्रक्टर. आई वर्क एट सीप्स डायमंड फॉर, ये है पूरा कंपनी जैसा है, corporate place at Andheri, Seeps, हम्म। where most of the diamond companies were there. So I used to go there to teach yoga for the people working there, the workers. यस You know, यस। so those हाउ 20 minutes. लवली। So वहाँ वो किया. फिर after marriage, since it was too far for me to travel, then I switched over to becoming a preschool teacher. बस फिर वो जर्नी चला. Then I had my own kids, so I was very dedicated that नहीं, I अगर once if I conceive, I want to give my full attention to my kid. हम्म। So then हम्म। I did that for now. So now that he was 6 years, 7 years, फिर मुझे हम्म। ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए. So I हम्म। had started a small online reselling group of mine, and I used to, हम्म। give them a lot of other products and everything. And the journey went on. Now that he is 11, 12, and after Corona struck, हमारे लिए भी mobiles came into picture. We started spending हम्म। more time because we were in the यस यस house. यस। So that is how I got to know Raisin. And हम्म। yeah, I of course I saw SD Academia's post, and it was, yes, that's how I think I began. एंड आई थिंक अब जब आपने शुरू करा कॉलेज डेज से, मुझे लगा एक जैसे हमारी दो तीन लाइंस के बाद कॉन्वर्सेशन एंड हो जाएगी, देन आई लास्ट अनदर क्वेश्चन, बट लेयर्स एंड देन अनदर लेयर। एंड योगिनी, आपने कितना कुछ किया है अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुंचने से पहले। मल्टीपल सेक्टर्स का एक्सपीरियंस भी आपको बहुत काम आता है एंटरप्रेन्योर की जर्नी में। आपने हर एक सेक्टर में जाकर काम किया, Right. आपको पता है कि कहाँ पर किस तरीके से आपको अपने वर्क को डिस्प्ले करना है, कहाँ पर आपको कितना प्रेजेंटेबल होना है। तो दैट इज ट्रूली अमेजिंग। हाँ, मुझे बताइए कि किस उम्र में आपकी शादी हुई थी, आपके कितने साल के थे उस टाइम पर? I was 24, 24। 24 एंड years. ओके, Yes. एंड शादी के बाद और जो शादी के पहले की लाइफ है उसमें कितना आपने अंतर महसूस करा, कितना डिफरेंस आया आफ्टर वेडिंग? Yes. No, इतना नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आया, since I told you that my mom wasn't well. So I had या। taken my home responsibility quite हम्म। early in life. When हम्म। I think I was ninth, in my ninth standard, ओह। ninth या eighth standard से तब से ही मैंने responsibilities ले ली थी house की. हम्म। So for me, after marriage, it was not difficult. Yes, but mine was a love marriage. So हम्म। the थोड़ा community में फर्क था. So going and adjusting there was a little different thing. I was a Jain at my mom's place. So यस यस सबसे यस। बड़ा difference was that going to a non-Jain family. So हम्म। those potatoes, onions, carrots, and गॉट all इट। that had हाँ जी begun. हाँ जी हाँ Yes. जी। So yes, थोड़ा बहुत ये था, but I had a supportive family there also. So I think yes, that I could manage that well. ओके ओके लवली। सो योगिनी, आपको वो पहला दिन याद है जब पहली बार आपके सामने रेजन मटेरियल आया था?
आपके पास आपका रेजिन का किट है, तो आपको पहली बार रेजिन के साथ कुछ काम करना था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब क्योटिक था, स्मूथ था, गड़बड़ कुछ करी, क्या हुआ था उस दिन? No, I think that was, I was so very excited उस दिन के लिए, and I remember it was Sharad sir's class, the हम्म। वो tray making यस, activity थी हमारी. इंट्रोडक्टरी। Yes, and that was a tray और वो black board, and then he thought, and मैंने बोला अच्छा ऐसे ही करना है, बस यही है. And हाँ I हाँ हाँ। tried, but तभी मुझे लगा it was nice, easy. But when I started with the coaster, थोड़ा हम्म। उधर coaster में गड़बड़ किया, but then sir was like, it's okay Yogini, कर सकते हैं. Let you हाँ। will be, because it was a small boundary, I think इसके लिए थोड़ा हम्म। उसमें difficulty थी. But then I think the tray went off very smooth and very nice. So I got लवली। my confidence there कि नहीं ये हो पाएगा करके. Although raisin, लवली। क्योंकि raisin is very flowing. तो जब सर सिखा रहे थे, we didn't got, I mean I was कि हो जाएगा हो जाएगा. हाँ, बैलेंस बन But जाएगा। actually जब करने लिया, the consistency and working with it was a little difficult, but I think I was able to get my hands on it. लवली। सो योगिनी, आज इतने टाइम के बाद, इतनी प्रैक्टिस के बाद, इतने सारे आर्ट वर्क के बाद, आप अपने आप को कैसा आर्टिस्ट महसूस करती है? कैसी रेजन आर्टिस्ट है अभी आप? कितना डिफरेंस आया है? बहुत, आई थिंक एक्सट्रीमली. फर्स्ट तो मुझे ऐसा लगता है दैट आर्ट इज नॉट ओनली व्हाट वी डू. या। जो भी है सिर्फ वो करते हैं नहीं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर बिहेवियर. इट इज वेरी, या। वो बहुत कुछ चेंज करता है एक पर्सनालिटी में. पेशेंस लेवल बढ़ता है. देन देर इज सो मच कंपटीशन आउटसाइड, तो उसको कैसे हम्म। लेना है. हैव वी टू बिकम अ पार्ट ऑफ द कंपटीशन, और वी आर नॉट बीइंग अ पार्ट. उसके साथ हम्म। कैसे काम करना है. एंड आई थिंक दैट वाज अ फैबुलस थिंग दैट आई लर्न थ्रू आउट दिस 1.5 year 2 year जर्नी विद एसडी. हम्म। स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन दैट सीइंग हम्म। यॉल, प्रिया मैम आप हो, शरद सर है, मैंडी मैम है. आई थिंक आई हैव गॉट यॉल थ्री एज माय ट्यूटर्स, लकी इनफ. बट आई वाज ऑलवेज, वी सी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते थे कि ये हमारा कॉपी कर लिया, ये है. तो हम्म। आई वाज लाइक, व्हाई आर यू बॉदर्ड आल्सो. सो हम्म। मतलब दिस इज व्हाट आई थिंक दैट इज द मेन थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम you all. Okay, हम्म। let the world do anything, but you या। focus on your stuff. And so एक artist के लिए it is not only the artwork, I think, हम्म। but it's a magical journey which यस। goes from scratch. Your personality से आपका art भी ये होता है. बहुत So होता I है have जी। developed my art, plus I have developed a lot of patience. I have developed a lot of understanding towards seeing people. So yes, that has come out. And being helpful around. I have many people connected with me who are doing raisin. And anytime I get a message, where I'm stuck here, will you be able to help, I am surely there. And I actually help them off. I don't find them as this is something that I've really learned from SD, and I cherish that a lot. दैट्स अमेजिंग योगिनी, एंड आई थिंक आपने इतना लेमन लैंग्वेज में पूरी चीज को समझाया है कि कोई भी इंसान, कोई भी आर्टिस्ट आपसे रिलेट कर सकता है कि एक्चुअली में एक आर्टिस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेजन आर्ट और अल्कोहलिक और एनी कंटेम्प्रेरी आर्ट मीडियम, इट्स जस्ट अबाउट आर्ट एंड आर्ट इंडस्ट्री. सो आपने एज एन Yes. आर्टिस्ट अपने आप को डेफिनेटली इवॉल्व किया है, और वो रिजल्ट्स हम देख पा रहे हैं, और बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं. और जो छोटी छोटी अच्छी चीजें आपके अंदर आई है, आई थिंक वो बहुत अच्छी है. और मुझे लगता है कि बाय द टाइम हम थर्ड सीजन में मिलकर कुछ और बातें डिस्कस कर होंगे कि अब इतना कुछ हो गया. बट अच्छी बात है, ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एक जगह पे स्टक ना रहकर इवॉल्व होना तो उससे भी ज्यादा आप हो रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, एंड मैं चाहती हूँ कि आप Thank you. ऐसे ही, ये जर्नी आपकी ऐसे ही खूबसूरत और ज्यादा होती रहे. ताई? So, ma'am, if you see, you will be able to see the kind. I have tried to do all different kinds that I've learned from यस. SD. Yeah, I have tried put my hands to bring that out to people to see that. See, I can do so much. So art, यस. so I think my products only will give. वो ही बोलेंगे मेरे लिए. बिल्कुल, 100%, 100. इवन कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले ही मैंने आपको कहा कि इस बार जो आप कलेक्शन लेकर आए हो, वो कलेक्शन बहुत बहुत अच्छी है. लास्ट टाइम आई वाज लिटरली एक्सपेक्टिंग यू कि आप लिस्ट में कहीं ना कहीं तो होगे, क्योंकि मैं आपको क्लास में देखती हूँ, हमारी बात भी होती है ना. सो बट जब मुझे पता लगा आप सेकंड सीजन में आ रहे हो, आई वाज प्रीटी मच श्योर कि इस बार कुछ धमाका होएगा. ठीक है, कुछ मजेदार देखने के लिए मिलेगा, एंड तो एक्चुअली हुआ. सो मैं बहुत हैप्पी हूँ आपके लिए. सो योगिनी, आप मुझे बताएं कि जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं, या जितने भी आप, मतलब आपके कंटेम्प्रेरीज हैं, जो किसी और आर्ट फील्ड में, बट वो चाहते हैं रेजिन करना, रेजिन इंडस्ट्री में आना, या रेजिन को सीखना,
सो एज अ प्रो रेजिन आर्टिस्ट आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए रेजिन शुरू करने से पहले? I think just do it. There is nothing I feel that reason you'll not be able to do. हम्म वो जो you say that so called thing that कैसे करेंगे कैसे हो पाएगा, I think that वो हो हम्म ही जाता है. Because when जी even I had these things before joining, will I be able to हम्म do? Will I be able to give that time? हाँ, time लगता है. See, हम्म everybody has their own commitments. I feel that I have my so and so problems, but I think जब हम ग्रुप में क्लास में बैठते थे, वी यूज टू सी अदर्स ऑल्सो, दे आर हम्म ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स, बट हो राइट जाता था किस ना किस तरीके से हो गया. इवन दीज माई मैंने जब एसडी के लिए जब अपना एसडी स्टूडियो का व्हेन इट केम अप, आई वाज हम्म लाइक कि कैसे मैं कर पाऊंगी, बिकॉज नथिंग वाज रेडी. आई वाज लाइक हाउ विल आई बी एबल टू मैनेज, वो कैसे हम्म वो डेट्स को मैच कर पाऊंगी. But yes, I had people around me. I had हाँ my friends and all who pushed me. Yogini, यस for you it is nothing. You've done so यस many things earlier. You can do it. So I think when you दैट्स सो have people स्वीट around you who are there to encourage you, and हम्म so good people around, and tutors are so good. So I think yes, वो manage हो जाएगा. There हो is जाता है nothing I feel that you don't need to be an artist also if you think you want to get into raising. एंड योगिनी ये पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है जो मैं हर किसी से पूछती हूँ जो भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो आपने अपने पीओवी से जितने भी मुझे आंसर दिए हैं अभी तक वो बहुत ही कमेंडेबल हैं। इससे पता लगता है कि आप एज अ पर्सन एज आर्टिस्ट कैसे हैं और आपका नजरिया कैसा है। तो इसी नजरिए को और ज्यादा जानने के लिए मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हमारी करंट सिचुएशन पे एज यू नो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो टैलेंटेड हैं, बहुत सारा टैलेंट है उनके, तो कुछ करना चाहती हैं, बनना चाहती हैं, बट वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जितनी भी बेड़ियां हैं उसमें वो बंध के रह गई हैं, है ना, निकल नहीं पाती अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो पुश नहीं मिल पाता। बट अगर मैं आपकी जर्नी को देखूं योगिनी, आप इसे बताएं कि 8th 9th क्लास से आप सपोर्ट करिए फैमिली को, जो आपके दिल ने कहा, जो आपको लगा कि उस टाइम सही है आपने वो किया, इतने सारे सेक्टर्स में आपने काम किया, और बेबी होने के बाद, शादी होने के बाद आज आपका ब्रांड, आपने खुद का ब्रांड सेटअप कर लिया है। सो डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारी पावर चाहिए जो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को एक मैसेज दे अपनी साइड से जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जो वहां से निकलना चाहते हैं और वो भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। सो वन मैसेज फॉर देम। My message for them would be just as Shah Rukh Khan's dialogue is there. जब आप कुछ शिद्दत से करना चाहो तो पूरी कायनात करने में आपकी मदद करती है. It's the same बिल्कुल। thing I feel. When you think that you want to get into it, my journey for raisin started. That is how it began. मैंने पहले हम्म एक बार देखा, मुझे लगा ये क्या है, व्हाट वाज दिस. आई रिमेम्बर सीइंग सम फॉरेन वीडियो जहां पे वो कोन बनाया हुआ था, अंदर फ्लावर्स था, रोज. हम्म Some rose हम्म flower was put into the raisin and all that. वहां I had the same feeling कि ये कैसे किया, it's looking so beautiful. So वो कैसे किया was the instance that I was thinking over the whole day. And then हम्म suddenly next day when I open raisin things comes out, थर्ड डे खोलती हूँ तो उसके ही लिंक में और कुछ आ जाता है, फोर्थ डे खोलती हूँ, ऐसे करके विद इन 10 days आई थिंक आई वॉज इंट्रोड्यूस टू एसडी. देन वो टाइम पे इतना, आई विल टेल यू दैट, इतना मैजिकल था कि there was a lot of fraud going on. So I was हम्म not able to, I told my husband that I want to do this and I'm really into it. So he was also that ये offline online है, do you think they are genuine people and all that. So वो सब मैंने खुद एक के बाद it started coming. And then I spoke to my mom. You would हम्म not believe, my mom had already registered with SD once when she was at my home. वो रहने अच्छा आई थी. Yes, and she said that she had this, I think coaster का class उन्होंने join किया था आपके साथ fresh ओ thing, because my brother की wedding थी. So she was looking forward to make this wedding card जो हम लोग देते हैं ना सामने वाले जी को, जी that जी 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 उसको वो करना था, इसके लिए she had joined this raisin thing and she was doing it at my place, but I was unaware that she has joined with SD. जब उनसे ओ मैंने बात की तब उन्होंने बोला कि एसडी में तो मैंने किया था, तेरे को पता नहीं, मैं तेरे घर आई थी तभी. आई सेड हाँ ओ, एंड देन इट वाज लाइक कि हाँ अभी जेन्युइन ही है. जी एंड जी सो जी इट वेंट ऑन. सो आई थिंक जब आप कुछ चीज करना चाहते हो ना,
You have to जी. just go on thinking about it without how, when these questions, how, when, what comes, no, then that is a barrier. हम्म. Just don't let that come. Magic will have its place. My life is a total magic. I trust magic like hell. हम्म. I feel that magic is the small things that happen in life is magic. Right, There right, is no right. fairy who's coming and giving you the wand. Yes. But the smaller things, these are the magical Yeah. things that happen in life. So I think that how and what should be removed, तो हो जाएगा. बिल्कुल. इवन सेम हियर योगिनी. आई ट्रूली बिलीव इन यूनिवर्स एंड मैनिफेस्टेशन. आपको बस एक राइट डायरेक्शन में मैनिफेस्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स जो है वो आपकी विशेस को पूरा करता रहता है. एंड एग्जैक्टली जैसे जो आपने मैजिक के बारे में बताया, और ये आपकी डिटर्मिनेशन है, आपका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर क्राफ्ट, जो आपको ये सारी की सारी पॉजिटिव चीजों से ही कनेक्ट करता है. तो आपने बिल्कुल सही कहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, फॉर श्योर. सो योगिनी, अब आप मुझे बताइए कि अपने ब्रांड के बारे में. आपके ब्रांड का क्या नाम है, आपके ब्रांड में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और आपके ब्रांड की स्पेशलिटी क्या है? My first of all, my brand's name is Magic with Raisin Art. हम्म. Since I'm so dedicated and I feel that magic is all over, so I wanted magic to be there. So that is how the name came up. Uh, हम्म. then my brand, I am focusing more to be personalized. Raisin हम्म. भी जैसे लोग करते हैं, personalized पे ज्यादा ध्यान देते हैं. My हम्म. मेरा unique part वही है that अभी तक मैंने जितने भी products किए हैं, I have sat with the person, I have spoken about their family, and एक एक person को जानने के बाद I have हम्म. decided what should come, and I have put that my plan to them, and that हम्म. is how my projects have been made so far. I think, and मेरे customers अभी तक जितने भी they are liking it. I made this coffee, Of it's course. there on my page. I had made हम्म. this nameplate with the coffee हम्म. beans ka, that there were two brothers, and they both love coffee, and the coffee अच्छा. beans are always there. So मैंने वो चीज के साथ बनाया. So they were so happy. It was simple, आप देखोगे, या. but then yes, that is something that I'm looking forward, that हम्म. whenever या. you want something personalized, I'll be able to make that. Because अभी एक hanging भी था, you हम्म. bought love into my heart, life, ऐसे करके एक client मुझे मिली हम्म. थी, who अच्छा. उस जिसकी engagement थी, and she wanted to give her fiance. So that is अच्छा. how we turned that, because she was like कि हम्म. मुझे इससे पहले, I didn't know what was love. After he came, I want to portray that to him. तो हमने हम्म. ऐसे ही बनाया था with the bell and all. So small things with raisin and a flower. So the life was black. I tried to portray that, and then हम्म. we gave this flower effect to it, so which showed that the love is blooming. And then we put this bell, that you made this sound of love into my life and all. So yes, so I look forward to knowing the person what they need exactly, and फिर बनाना I like. So yes, my brand लवली. is that. लवली. एंड आई थिंक योगिनी, मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है ना, वो बिल्कुल आप ही की तरह ना, ऐसे उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है. In Yes. terms of videos, in terms of reels, in terms of be frequent posting, हर एक चीज बहुत अच्छी, अपने टाइम पर, अपने तरीके से, अपने स्टाइल में. तो बहुत अच्छी बात है. सो आई रियली वांट यू ऑल टू फॉलो हर और इंस्टाग्राम. अगर आपको कुछ कस्टमाइज करवाना है, कुछ बाय करना है अपने घर के लिए, एंड जैसा भी इन्होंने बोला कि वो जो इमोशन फेच कर कर आप अपने आर्टवर्क में डालकर आपके लिए प्रेजेंट करेंगी ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा. सो जस्ट फॉलो हर और इंस्टाग्राम. एंड अगर आप मुंबई में है तो ये वहीं पर ही है, ठीक है. तो आप जाइए इनके पास एंड अपना मन पसंदीदा रेजन आर्ट इनसे क्रिएट करवाइए. राइट योगिनी? Yes, ma'am. ऑल राइट. तो योगिनी, अब आप मुझे बताइए कि जैसे, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपके 5 ईयर प्लान्स क्या हैं, आपके 10 ईयर प्लान्स क्या. आई नो एज एन आर्टिस्ट इतना लंबा तो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बिल्कुल ऐसे कि बेबी स्टेप्स की तरह, वन स्टेप एट अ टाइम. तो आपके सेट ऑफ गोल्स क्या है जो आपको आने वाले टाइम पर अपने लिए, अपनी स्किल्स के लिए, अपने ब्रांड के लिए पूरा करना है?
Ma'am, मुझे I believe that you know how much there is never any ending to learning. हम्म The thing is always my learning skills are always going to go on wherever I am able to get something. I'd surely like to go. So as an हम्म artist, I'm always wanting to get that X factor जहाँ पे भी wherever I can. So yes, I see myself looking at more people doing their artwork, trying to learn whatever I can best from their art, हम्म and being joined, in associate with SD throughout the life. फॉर I, श्योर so मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, yes, slowly, steadily, even I'll be growing with my हम्म experiences. So यस as such, अभी तो कुछ नहीं सोचा है, यही सोचा है कि हाँ, मुझे मेरा आर्ट करते रहना है, and हम्म how people will like it, and हम्म कैसे I'll be able to just help myself with whatever I can. लवली लवली। एंड योगिनी, आप मुझे अब बताइए अपने ब्रांड के रेवेन्यू के बारे में, कि अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, और आप प्रेजेंस से कितना अर्न कर पा रही अभी अगर देखने जाए तो आई हैव आई वाज, जैसे आपने भी बोला, आई वाज वर्किंग थ्रू माय आर्ट। तो मैंने ज्यादा कुछ, बिकॉज आई बिलीव कि जब देना है तो ऐसा देना हूँ? है दैट देयर आर नो फ्लॉज। सो आई बिल्कुल स्टार्टेड बिल्कुल। माय टेकिंग अप एनी प्रोजेक्ट्स वेरी लेट। आई डिडंट जस्ट वुडंट वांट टू स्टार्ट अप एंड किसी को भी कुछ भी गॉट दे दूं। इट। So जी I जी। worked on myself. I made few projects. I have few things at home that I am working on. So वो सब जब किया, and then I started up. So I think I've done around 10 to 12 projects. ओह I लवली। also made 70 trophies in ओह just one लवली। week. Yes. वाओ। That was a home project. Maybe I just took it up myself. But yes, वो एक experience लेना था मुझे कि मैं कैसे कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी. And you will not believe, ma'am, in 4 days time I have finished this trophy thing. We decided on the वाओ। first day. I didn't have material, and I was logging कि मैं मटेरियल कहाँ से जनरेट करूँ. बॉम्बे में आई नीडेड गुड मटेरियल बिकॉज वो. सो यस, आई 2 दिन में कैसे भी मैंने फोन लगाए सबको, मेरे मटेरियल आई गॉट, एंड देन इन 4 days टाइम 70 ट्रॉफीज वाज समथिंग दैट आई मेड. सो वाओ दैट दैट्स वाज ट्रूली वन. अमेजिंग। हाँ, बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे पास. मुझे ऐसा पता, आई गॉट कॉन्फिडेंस. So हम्म yes, so I have done around 10 to 12 projects. I am हम्म। working. There are 2, 3 projects in line. People have discussed with लवली। me. So yes, we are going to put that in paper. So revenue, I was looking on skill based. Abhi tak not too much हम्म of revenue that has हम्म। come up. Yes, yes, but I've been able to generate around a lakh, 1.5 lakh, something like that. Yes. दैट्स ट्रूली इंस्पायरिंग योगिनी। एंड ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आपने प्रॉपरली बताया कि हाँ मैं इतने टाइम तक पे नहीं थी एक्टिव, जब एक्टिव हुई तो इतना काम हुआ, दैट्स ट्रूली अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग एट द सेम टाइम, कि आप इतनी ज्यादा ट्रूथफुल है अपने स्किल्स को लेकर, अपने काम को लेकर। एंड आई थिंक वही आपको सबसे अलग बनाता है। सो योगिनी, माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अबाउट यू नो योर मेंटल हेल्थ। फॉर एग्जांपल, जैसे हम इतना सब कुछ काम करते हैं, आप अपनी फैमिली देख रहे हैं, अपने आप को नरिश करना है, फैमिली को, अपने बिजनेस को, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करना है, वीडियो भी आपको बनाना है, एंड यू नो व्हाट नॉट। सो इतना सब कुछ कर कर एंड में आकर कोई भी इंसान थोड़ा सा थक जाता है, थोड़ा सा ओवरवेलम हो जाता है, तो आप अपने आप को दोबारा से रिडीम करने के लिए, चार्ज अप करने के लिए क्या करते हो? Ma'am, for that, I would like to tell you that I am a Shiv Yogi. If you put Shiv Yoga at in कहाँ पे भी Facebook पे डालोगे, Instagram डालोगे, I have Dr. Avdut Shivanand is my guru, and he's been training us from, like, I have been connected with him from, like, say 12 years now, ever since my son वाओ। was born. And he's been guiding me. I think I've never met him formally. He believes हम्म in not meeting informal. We हम्म just connect mind to mind. So I feel he is there with me always. And हम्म the moment आपने जैसे बोला कि how did you strike, हम्म वही वही थे जो who helped me out. And even today he's there always. Whenever I say Baba, we with love we call him Babaji. He's a हम्म PhD done person, and if you find him on हम्म net, if you just put Shivyo, and you see, you will get to know that they will his he has a full site, and they have lot of the things done for cancer and many other things, but
the way they teach. The Durga Hmm. Saptasati is there. Then there is Lord Shiva's teachings, and the Oh. way he does is tremendous. So I have got all my energy from there, and the positivity that you see also comes from there, because Hmm. it is there. And yes, my family and my friend, I have a very good friend, who has been supporting the there always. My husband is lovely. He's been, my Hmm. kiddo is very, he's their mom. He's the judge. He's the judge there. Hmm. Hmm. Mom, this I think is not proper. I think you should retouch this. So he's an evaluator there. So yes, my energy comes from Shivyo. I get all my positivity. Whoever I am today is only because, yes, there have been times where I've been low. But my friend, my husband, Shivyo, my parents, they think Yeah. that, I am always somebody who's shining and I will excel in everything that I do. So they are Hmm. always there, Yeah. and they Lovely. also keep, Hmm. pushing me up. So yes. So good to hear that. So, योगिनी, मुझे genuinely realize नहीं हुआ कि हमने इतनी लंबी conversation कब करी और इतना टाइम कैसे हुआ. मैं quickly आपको लेके जा रही हूँ हमारे next segment पे, that is the rapid fire round, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ rapid questions. So चले? All right. So rapid fire round with Yogini. Yogini, your first question is about your favorite color to work with in resin art. My favorite color is green. I will want to work with green anywhere and everywhere. So I think Okay. that is something. But yes, gold and red also is something that I like, and Okay. especially in Okay. this All right. Abstract art or realistic art? realistic. 2:1 resin or 3:1 resin? 2:1. Opaque pigment or metallic pigment? This is tricky. I work with both, I think. Yes. Hmm. Even Good. even the abstract and the realistic, I think abstract also is something that because my work shows a lot of abstract thing. Realistic is Hmm. very less. So there also, Okay. I think I was wrong. Yes. All right. No problem. Resin jewelry or larger resin products? Larger resin products. All right. Glossy or matte finish? Gloss. Okay. Preferred resin art tools? I'll give you choices. Silicone mold or freeform pouring with glue gun? Silicon mold. Mm-hmm. Early bird or night owl? Night out. Okay. Tea person or coffee person? Coffee. All right. Beach person or mountain person? Beach. Any time. Beach. Okay. Being a boss or work in a professional setup? I think working in a professional setup, I can't Okay. boss over For anyone. now, it's okay, but being a boss in future. Yes, yes. Okay. What do you prefer for resin projects? Digital sketchbook or physical sketchbook? Physical. Okay. Your go-to source for art supplies? SD Finance. I have All most of right. my things from there, although shipping and all, but yes, I believe in SD's thing. Yes, I have to at times get from my nearby sources, like I said earlier also. Hmm. But yes, SD Finance is always the one that I choose. All right. Is there any dream collaboration you're looking for with any artist or any firm? SD Studios, SD And it's Academia is happening always there. already. And my last rapid question is about your favorite type of music. किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है? I'm a very music oriented person. I like listening to soft music, romantic music. So I think All yes. right. All right. Lovely. तो योगिनी, कोई भी अपने एक फेवरेट सॉन्ग का मुझे आप लाइन सुना दो, then we'll wrap up and I'll say goodbye to you. That's difficult. Okay, I'll try. Hmm. मैं तेनू समझावा कि बाकी ना तेरे बिन तेरे बिना लगदा लगता जी, जी, तू क्या तू जाने क्या प्यार मेरा, मैं मैं करा तेरा इंतजार, इंतजार तेरा, तू दिल तू हो दिल या तू जान जान मेरी, मेरी, मैं मैं तेनू तेनू समझावा. समझावा की. How lovely! Wonderful, Yogini. Thank you so much for being so wonderful. And I just love your answers. I'll see you super soon for more collaboration, for more interviews. Till now, I just want to wish you all the best for SD Studio Season 2. ये सीजन आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए और आपकी सारी विशेस पूरी हो. और जिस पैजेट का आप वेट कर रहे हो यहाँ पर होने का, वो डेफिनेटली होगा. Okay? Thank you, thanks a All lot, ma'am. right. I'll see you super soon. Bye bye. Take care. Goodbye, ma'am. Bye.